हाँ एनर्जी 7 मतलब क्लास में भी है, शुरुआत में देख लेना, एंड में भी दे दूंगा। जिनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या, जैसे एजेंट का टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। कैंटिलीवर बीम में थीटा और वाई दोनों फ्री एंड पे ही मैक्सिमम आता है, चाहे किसी भी टाइप का लोडिंग कंडीशन हो, थीटा और वाई दोनों फ्री एंड पे मैक्सिमम आता है। तो थीटा मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाता है आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 EI, और वाई मैक्सिमम का हो जाता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3 EI, है ना। फिर कोई बोल रहा है सर आपने टेस्ट सीरीज में डबल इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन, अरे तो मैं तो दूंगा ही ना भाई, मैं तो दूंगा ही। मैं तो यहाँ क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये मतलब मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ भाई। मैंने तुमको पेड कोर्स में भी पूरा पढ़ाया है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। किस किस टाइप का तुम लोग सवाल पूछते हो भाई, मैं तो एक आध क्वेश्चन तो दूंगा ही ना। मोमेंट एरिया मेथड पे भी सवाल दिया है मैंने, उसमें उसमें क्या है यार। गेट का एग्जाम तुमको एक बार देना है, मॉक टेस्ट तुम 10 दे रहे हो, तो ऐसा तो होगा ही ना यार कि उन 10 में से कोई एक आध क्वेश्चन एकदम ऐसे किसी अलग टॉपिक से आएगा ही। चलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, थीटा मैक्सिमम हो जाता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 EI, वाई मैक्सिमम हो जाएगा डब्ल्यू एल टू द पावर 4 बाय 8 EI। ठीक है, देन यूवीएल है, थीटा मैक्सिमम हो जाता है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 EI, वाई मैक्सिमम हो जाता है डब्ल्यू एल टू द पावर 4। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूले याद करते हो, जैसे बहुत टाइम, ठीक है, कंडीशन है वाई मैक्सिमम हो जाता है एम एल स्क्वायर बाय 2 EI। तो ये 4 फॉर्मूले हैं कैंटिलीवर बीम के। सिंपली सपोर्टेड बीम के 2 सिंपल फॉर्मूले याद रखने हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट
टू पॉइंट करने की जरूरत। अब आज सुपर पोजिशन है और आप जैसे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 EI और के ऊपर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स, यानी कि वो बीम्स जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कम है ना। तो जैसे एक ये वाली बीम आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रोब्ड मैक्सिमम इन कंप्रेशन निकालना है तो ये तो प्लस पी बाय ए ही रहेगा, लेकिन यहां बेंडिंग स्ट्रेस आप माइनस वाला रख दोगे। तो कंबाइंड एक्सियल लोड और बेंडिंग के क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से होते हैं, इसमें आपको बस दोनों स्ट्रेसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, कंबाइंड एक्सियल लोड एंड बेंडिंग। आप कंबाइंड एक्सियल लोड एंड ट्विस्टिंग पे आ जाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट्स के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, और हॉलो शाफ्ट्स के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई बाई 32 डी। तो अब आ जाइए हमारे थर्ड चैप्टर में, विच इज टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट्स। अब देखो टॉर्शन जो है वो मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, और अच्छी बात यह है कि टॉर्शन सबसे छोटा चैप्टर में से एक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि भले छोटा टॉपिक है, इसमें ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए है नहीं, लेकिन इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आते हैं तो बन जाते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल इसमें से नहीं आते, तो इसीलिए इट्स अ स्कोरिंग टॉपिक, इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर। तो टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट्स में चलते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। टॉर्शन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी शाफ्ट को पकड़ के ऐसा घुमाते हो तो ये जो हो रहा है ट्विस्टिंग, चलिए आई एम सो सॉरी, ये बार बार बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ट्विस्ट, यहाँ सर्कुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट्स के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, और हॉलो शाफ्ट्स के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई बाई 32 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक तो शियर स्ट्रेस और दूसरा एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब शियर स्ट्रेस अगर आप सॉलिड शाफ्ट का देखोगे कुछ इस तरीके से वेरिएशन आता है। मान लीजिए मैं टॉप से लेके बॉटम तक देख रहा हूं कि शियर स्ट्रेस कैसे वैरी करेगा। तो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है? लीनियर वेरिएशन होता है ना, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये बार बार जो बफरिंग की प्रॉब्लम, इंटरनेट जो है वो एकदम सही चल रहा है, इंटरनेट की स्पीड वगैरह जो है वो एकदम सही है। तो हमारे एंड से हमारी मशीनों में कोई दिक्कत नहीं, हमारे सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एक्चुअली फ्रॉम यूट्यूब एंड। यूट्यूब में ही कुछ ग्लिच है जिसकी वजह से फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, सिंपल से कि सेंटर पे कितना होगा, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड जाएंगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लीनियर होगा, पैराबोला, ऐसा इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। और अब टाउ मैक्सिमम जब आप निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? 16T/πdq, है ना। आर मैक्सिमम आप रखोगे, जे की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, यू गेट दिस 16T/πdq। चलिए, सुंदर पिचाई जी कहाँ देख रहे हैं भाई हमारी क्लास? इंजीनियरिंग खत्म की उनको बहुत बहुत टाइम हो गया है ना। चलिए, अब आ जाइए हॉलो शाफ्ट के ऊपर। तो हॉलो शाफ्ट में अगेन लीनियर ही होगा, इस पे 16 टू द पावर 4। नाउ व्हाट इज दिस के? तो ये बल्क मॉड्यूलस नहीं है बेटा, ठीक है। देखो हमारे पास A to Z कुछ ही लेटर्स हैं, उन्हीं में से कुछ यूज करना रहता है, तो के को अलग अलग जगहों पे, एक ही लेटर को है अलग अलग जगहों पे यूज कर लिया जाता है। तो ये बल्क मॉड्यूलस नहीं है, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर। तो मुझे मार्क्स करना है साईराम के जो है इट इज नॉट बल्क मॉड्यूलस, इट इज अ डिफरेंट थिंग। इसके लिए कोई दूसरा लेटर यूज करना चाहिए था, लेकिन चूंकि सदियों से यही प्रथा चली जा रही है तो इसलिए मैं भी यही प्रथा यूज कर रहा हूं, मैं भी के ही यूज कर डाल रखोगे सॉलिड के हॉलो शाफ्ट के लिए।
अब आ जाइए अच्छा एक सवाल कर लेते हैं, है ना, टाउ मैक्स निकालने का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप फॉर्मूले में वैल्यू रखने की प्रैक्टिस भी कर लो। बाकी कल सुपर 20 और महाअभ्यास 2 सेशन है, एक 2 बजे होगा इंग्लिश चैनल पे, उसमें भी आ ही जाना भाई, इंग्लिश चैनल है तो ऐसा नहीं कि ना ना हमको तो अंग्रेजी नहीं आवत है तो हम तो दूर रहे। तो बेटा अंग्रेजी चैनल भले है, लेकिन तो ऐसा नहीं कि ना ना हमको तो अंग्रेजी नहीं आवत है तो हम तो दूर रहे। तो बेटा अंग्रेजी चैनल भले है, लेकिन सवाल प्रैक्टिस करना है यार, हिंदी इंग्लिश से क्या फर्क पड़ता है, इतनी इंग्लिश तो आती है अपने को, है ना। तो 2 बजे सुपर 20 होगा, 20 क्वेश्चन जबरदस्त वाले इंग्लिश में कराऊंगा। फिर शाम को 7 बजे हिंदी चैनल यानी इसी चैनल पे होगा, उसमें 30 बेहतरीन क्वेश्चन और क्वेश्चन अलग होंगे। सुपर 20 और महाअभ्यास दोनों के क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है यार, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखो, खत्म करो यार। टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू 16 टी बाय पाई डी क्यूब। और देखो टी की वैल्यू भी जो है वो 4 पाई किलो न्यूटन मीटर दी है। किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। पाई और पाई कट जाएगा, है नहीं, ताकि आप लोगों को एक सुंदर सा आंसर मिले। तो ये चीज गेट में भी कई बार आती है, इसलिए मैं भी ऐसा करता हूं कि पाई पाई कट जाए, आप पाई पाई के मोहताज ना रहो, और आपका जो आंसर है एक बढ़िया सा एक राउंड फिगर है 125 मेगापास्कल। यस सर, विल दिस 50 क्वेश्चन इन पीवाईक्यू आर इनफ? अरे भाई मोर देन इनफ है, और वैसे भी अभी मैं नहीं बोलूंगा इनफ है तो आप व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड एट द पेरिफेरी एट ए? सर होगा जीरो। यस, क्यों होगा जीरो? क्योंकि भाई यहाँ कोई इंटरनल फोर्स है ही नहीं ना। अगर मैं यहाँ एक सेक्शन लेता हूं तो राइट साइड से देयर इज नो इंटरनल टॉर्क, तो भैया अगर मैं यहाँ सेक्शन लेता हूं, टाउ टी जीरो है तो टी जीरो है तो टाउ जीरो है, खत्म। लेकिन हाँ, यहां से यहां के बीच में अगर मुझसे पूछा जाएगा तो टॉर्क विल बी 20 किलो न्यूटन मीटर, है ना। चलो बहुत बढ़िया यार। अब आ जाइए पोलर सेक्शन मॉड्यूलस पे। पोलर सेक्शन मॉड्यूलस जे कि ये कितना टॉर्क झेल सकता है। जितना ज्यादा इसका पोलर सेक्शन मॉड्यूलस होगा, ये उतना ज्यादा टॉर्क झेल सकेगा, राइट। तो अलावेबल टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर सेक्शन मॉड्यूलस। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है मैं आपको बता देता हूं। अभी तक शायद गेट में आया तो नहीं है, बट आ सकता है। एक सीपी का रेशियो एक्स, थोड़ी देर बाद फ्लेक्सिबिलिटी जे, है ना, एंड जीजे बाय एल, सेम प्रोसेस। तो बेटा यहां आपको एक्सटर्नल टॉर्क्स दिए हुए हैं, इंटरनल टॉर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ए बी में इंटरनल टॉर्क निकालना है, तो ए से बी के बीच में एक सेक्शन लिए, लेफ्ट से देखोगे एक ही टॉर्क लग रहा है 100 न्यूटन मीटर का। अब इसको पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बी से सी के बीच में एक सेक्शन ले लो, लेफ्ट से दो टॉर्क है। अब अगर आप 100 को पॉजिटिव ले चुके हो तो 240 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो 100 माइनस 240 माइनस 140 टन मीटर। सीडी में राइट से एक ही टॉर्क लग रहा है 220 टन मीटर, लेफ्ट से निकालोगे तो भी 220 ही आएगा। तो ए बी बी सी सी डी, अब देखो ए बी और सी डी में एक डायरेक्शन में ट्विस्टिंग हो रही है, बीसी में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए क्लियर है ये चीज। इंटरनल टॉर्क कैसे निकालेंगे? सेम जैसे इंटरनली, जैसे शाफ्ट को दोनों, है ना, दोनों का थीटा निकालने के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट शाफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, बस और कुछ
अब आ जाइए शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स के ऊपर। तो शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स जो है मैकेनिकल वालों के लिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिविल में फिर भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, बट लेयर पे शियर स्ट्रेस निकाल बाय आई इनटू बी। नाउ व्हाट इज एस? एस इज द शियर फोर्स, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों चीजें तो सबको पता है। ए वाई बार और बी क्या होता है? तो बी इज द विड्थ ऑफ लेयर एक्स। बी क्या होता है? विड्थ ऑफ लेयर एक्स। अरे लेयर एक्स क्या सर, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दो। तो मेरे भाई अगर मान लीजिए सर्कुलर सेक्शन होगा तो जिस लेयर पे आप स्ट्रेस निकालोगे उसका विड्थ लोगे, क्योंकि यहां हर लेयर का विड्थ अलग अलग होगा। वैसे ही ट्रायंगुलर सेक्शन में भी, तो जिस पॉइंट पे आप स्ट्रेस निकालना चाहते हो, जैसे इस पॉइंट पे आप स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट से पास होने वाला जो लेयर है एक्स एक्स, उसका विड्थ होगा बी। एंड व्हाट विल बी ए वाई बार? तो आप अगर एक्स एक्स पे स्ट्रेस निकाल रहे हो तो ए वाई बार क्या हो जाएगा? इसके ऊपर या नीचे के टोटल एरिया का फर्स्ट मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ओके, so it is the first below area. I can use the relation between tau maximum and tau average of tau average. तो इसी के ऊपर सवाल आएगा tau maximum निकालने के ऊपर। ओके, सॉल्यूशन आपके ट्रिक बनता है सेक्शन ऑफ टाइम्स के लिए ही डायग्राम आता है, दैट इज 4/3 टाइम्स ऑफ tau average। तो यहां दोनों रिलेशन याद रखने, एक ये एक ये, तो याद रखने, बट डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, वहां थिक इंक्रीज हो जाता है, प्लेन्स जुड़ेंगे। दिस इज किलो न्यूटन, विल बाय 3 हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 10 मीटर पास्कल। ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ 100 mm बी में अगर मान लीजिए इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए जो शियर डेवलप होता है पर यूनिट लेंथ, वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए उसको शियर फ्लो बोल देते हैं। सिमेट्रिक सेक्शन हुआ, देखो अगर ये अनसिमेट्रिक सेक्शन होगा तो एक ट्विस्ट को निपटने के लिए हम फोर्स एक ऐसे पॉइंट पे लगाते हैं ताकि नेट मोमेंट आपका जीरो हो जाए। लगता है कि ट्विस्टिंग मोमेंट
Thanks to Brilliant for sponsoring this video. Beams are used. Allow a beam to deflect too much, and the deformed shape of the beam is called the elastic curve. We can define x as the distance along the axis of the undeformed beam, and y as the vertical deflex. Slope small. We can apply the spool to the load by reviews the bending moment. R is the rate stiffness equation. We can combine this with the moment curvature equation to get an expression that relates the deflection of the beam and the bending moment along it. But this equation is still quite complicated, so let's try and simplify it. Since we're limiting ourselves to elastic deformation and assuming that the slope of the elastic curve is small, a much simpler differential equation defining the deflection of the beam. It's easiest to understand how the method works using an example to determine the reaction forces. Is equal integrate and then integrate the CF2 deflection will occur. Gives us a system of equations we can solve to determine the remaining constants of integration. For cases where profile singularity functions to make solving this type of beam much easier. They are defined using this special notation and follow specific rules. When the expression inside the bracket gives a positive number, the output is the expression, but when it is negative, the output is 0. These are called Macaulay brackets, and applying them to calculate the deflection of beams is called Macaulay's method. Their behavior allows us to essentially turn different terms in the bending moment equation on and off as we move along a beam. We can work through the beam we looked at earlier to understand how. Let's see how the bend contributes to the bending moment, and the moment arm as well. And so the bending moment expression has to include an additional term. In this expression, x minus L over 2 will give a negative number. And so this expression, using Macaulay brackets, defines the bending moment along the entire length of the beam. The same thing works for distributed loads, although it's slightly different. When using Macaulay brackets for a uniformly distributed load, the bracket has to appear twice, once in the magnitude of the load and once in the moment arm. The moment arm is the distance to the center of the distributed load, so is equal to the length over which the load is. Distributed load is beam. If it does, load types. Our way to polynomial functions, like this, with a concentrated load. A integration method, often more powerful than it might be much late analysis. Act independently calculating the moment diagram between both points, A, divided by it tells us respect to that load. The deflection can be a displacement or an angle of rotation. The vertical of moment is the simple. We'll consider a case of pure bending. A section of a beam is said to be in a state of pure bending. We also have a case of pure bending. Let's look at flex. Here between the top centroid of the distance perfectly certain. The length r is the and any distance y. We define the distance y as being positive downward, but that's because apply hook curvature imagines must be equal to the bending moment m. And so we can calculate m by integration. Like the right is the due to its shape. So what does it tell us? Bending stress increases linearly as the bending moment and the distance from the neutral axis increase, and it decreases as the area moment of inertia increases. The maximum stress occurs at the fibers furthest from the neutral axis. The term I over y max depends only on the geometry of the cross-section, and so is called the section modulus, and is denoted using the letter S. It is a commonly used cross-section because it has a large area moment of inertia, which results in lower stresses. Here's how the bending stresses are distributed over an I-beam cross-section. They are 0 at the neutral axis, and reach a maximum at the outside surfaces of the flanges. So we've established how to calculate the bending stresses, which are normal stresses, for a case of pure bending. Most of the time, we won't have pure bending, as there will also be a shear force acting on the beam cross-section. Luckily, we can consider the flexure formula we derived earlier for pure bending to be vertically parallel to the cross-section, shear stresses, which act between horizontal layers of the beam. One way to visualize these horizontal stresses is to consider a beam. Now let's glue the planks together. When the load is applied, the planks cannot slide, and so horizontal stresses develop between them. If these shear stresses are larger than the shear strength of the glue bond, the glue will fail. These horizontal shear stresses don't exist if we apply a moment instead of a force, because that gives us a state of pure bending, and so there is no tendency for the planks to slide relative to one another. The presence of these horizontal shear stresses explains why wooden beams sometimes fail by splitting longitudinally. Stresses. We can calculate the average shear stress acting on the cross-section. The shear stress has to be 0 at the instead based on considering equilibrium of stresses acting on a small element within the beam. The equidistance above the cross-section, area moment of inertia of the location of the area above the location of interest, and the distance between the instead of the area above it. To calculate the first moment of area at this line, which is at a distance, we can interest force on the shapes, the variation of all element within the beam. The equation assumes that the shear stress is constant across the width b of the cross-section, so tau is a function of the distance along the beam, x, and the distance above the neutral axis, y. V is the shear force acting on the cross-section, which varies with the distance along the beam. B is the width of the cross-section. It can vary with the distance y from the neutral axis, but in this case, the cross-section is rectangular, so B is constant. I is the area moment of inertia, which is a constant value calculated based on the shape of the cross-section. And Q is the first moment of area for the portion of the cross-section above the location we want to calculate the shear stress for, so it varies with the distance y above or below the neutral axis. It is equal to the product of the area above the location of interest, and the distance between the centroid of that area and the neutral axis. If the location of interest is below the neutral axis moment of area by the distance from the neutral axis to the centroid.
Doing this calculation gives us an equation for Q as a function of the distance y from the neutral axis. The y term is squared, and so the shear stress varies parabolically over the height of the cross-section, with the maximum shear stress occurring at the neutral axis. This is opposite to the bending stress, which is 0 at the neutral axis, and explains why the horizontal shear failure of a wooden beam we saw earlier occurs close to the neutral axis. By saying it is equal to 1.5 times the average shear stress, so of the cross-section. Like that give us the average shear stresses tend to get us at the 3/2 for a rectangular one. We can also use the shear stress equation for thin-walled sections like this I-beam, E0, and because the flanges are very wide, the vertical shear stress in the flanges is very small. This means that the vertical shear stress is distributed like this. This is because they don't carry much of the vertical shear force, since the web is thin on both sides of the flanges horizontal. If you'd like to see more content like this, please consider supporting the channel on Patreon. हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बीम के कारण इनके अंदर नहीं हुआ मीन ये अगर हमें पता है तो हम बता मैक्सिमम आर्क बन गई जैसे हम सिंगल लेंथ तो इस बेंडर बराबर भी है तो तीनों एक दूसरे के बराबर आ सकते हैं।
उसको देखिए इस तरह से रखेंगे, उसके ऊपर वेट डालेंगे तो ये बेंड हो, कि बेंड ना हो, हम यही चाहते हैं ना, बीइंग बेंड ना हो। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो आपको एक टर्म एक्सेस होते हैं, गिर जाएगा, इसके लिए दिमाग लगाया कि इसको बीच में से कम कर दिया, यहां से इसका ये पार्ट यहां से उड़ा दिया कि उठ भाई साहब यहां से उठो, यहां से ये उठा दिया, और इन जो पार्ट उठाया यहां से इसको यहां पे लगा दिया, बस इतनी सी बात करते हैं। तो हमारा ये आया, लेकिन ऊपर रखने की जगह भी बन गई। अब ये जगह आई सेक्शन के ऊपर, और इस तरफ नशा बढ़ाइए। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए, मम्मी का फोन बटन दबा देकर बहुत खुशी मिलती है कि टीचर बनने ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका भी अगर साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज
या नीचे के टोटल पार एस इज द शियर फोर्स आई बीम्स जो है, और इसी के साथ ठीक है, इस पे जब लोड लगा रहा है तो एट नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं। क्लियर है? तो अगर न्यूटन और जहां का फॉर्मूला अलग अलग होता है, राइट, एम टू जी थी, ये बताता है कि कोई बीम कितनी दो कंपेयर करो, रेशियो निकाल, आप सेक्शन है मान लो, क्या हो जाएगा सर्कल पाई जाएगा डी ओ, के क्या होगा, दो सेक्शन भी दे दो 36, ठीक है। ओकेटी जी जे, टॉर्शनल स्टिफनेस जी जे बाय एल, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ई आई बाय एल, है ना? तो तीनों सिमिलर है, एक्सियल
crystal lattice and unit cell. Three-dimensional cubic lattice. The three-dimensional arrangement of particles as points in space is called space lattice or crystal lattice. These are 14 different three-dimensional lattices are possible, which are called Bravais lattice. Bravais was a French mathematician. Unit cell parameters A, B, C are three edges as alpha, beta, and gamma are the angles between them. Unit cell is the simple part of crystal lattice which repeats itself to generate a crystal. Unit cell. Types of unit cells. It is of two types. A. Primitive and B. Centered. When the constituent particles are present only at the corners of the unit cell, then it is called primitive unit cell. When the constituent particles are present at other positions along with corners, then it is called centered unit cell. It's again of three types. 1. Body-centered. 2. Face-centered. 3. End-centered. 1. Body-centered. If the constituent particle is present at the body-centered along with corners, called body-centered unit cell. 2. Face-centered. If the constituent particles are present at the 6 face centers along with corners, called face-centered unit cell. 3. End-centered. If the constituent particles are present at the centers of any two opposite faces along with corners, called end-centered unit cell. Seven crystal systems. Crystal systems. These are 230 crystal forms possible. These are classified into 32 classes on the basis of symmetry, which are further divided into 7 crystal systems depending on the crystallographic parameters A, B, C, and alpha, beta, gamma. Fractography is well known in the field of metals, but fractography of plastics is a relatively new field. In fractography, we study fractured surfaces. When a material fractures, in today's video, we will discuss common fracture modes, which includes ductile, brittle, and fatigue fracture. We will also discuss why and how the plastic material vary.
what are the features that help to identify the type of fracture, and also we will discuss role of microscopy in fracture analysis by case study. So, fracture is basically separation of a solid into two or more parts under application of load or stress. Depending on the type of load, fracture may be defined by tensile fracture, compressive fracture, shear fracture, fatigue fracture, and creep fracture, etc. However, these fractures are mainly characterized by either ductile or brittle fracture. The process of fracture mainly involves phenomena of crack initiation and crack propagation. Due to stress concentration or wire formation or inclusions, crack initiation takes place and it propagates depending on the nature of the material and amount of the stress applied, leaving some characteristic features corresponding to the particular type of failure. Ductile fracture undergo an appreciable plastic deformation before actually breaking apart. Plastic deformation is permanent deformation, whereas brittle fracture occurs with elastic deformation, which is non-permanent or temporary deformation. So, when force or stress is applied on a material, its shape or size changes due to the force. As we can see here in the schematic, this change is known as deformation. This force can be tensile, compressive, torsional, or bending force. As deformation occurs, internal intermolecular force arises that oppose the applied force. If the applied force is large enough to resist the intermolecular force, the material undergoes plastic deformation. And if the applied force is not large enough to overcome the intermolecular forces, then the material undergoes elastic deformation. In elastic deformation, when force is applied, the material deforms. But deformation disappears when the external force is removed and material returns to its original shape. It depends mainly on the chemical bonding of the material. The best example for elastic deformation come from elastomers such as elastic rubber. When we pull the rubber, it stretches. If we stop pulling it, it comes back to its original size. This shows phenomena of elastic deformation. But when pulling force is very high, it breaks. It cannot go back to its original shape. This is known as plastic deformation. Plastic deformation is permanent deformation or change in shape of a solid material with or without fracture under action of force. Plastic deformation is irreversible and permanent. It occurs due to the breakage of limited number of chemical bonds between atoms that make up that material. If we look at stress-strain curve, elastic deformation occurs at very low strain value or at very low deformation, whereas plastic deformation occurs at relatively high strain value. Therefore, brittle fracture that occurs with elastic deformation is characterized by low energy process, and ductile fracture that undergoes plastic deformation is identified as high energy process. Ductile fracture requires much more energy compared to brittle fracture. So, we can say that brittle and ductile failures are two extreme behavior of a material, like black and white. But we should not forget that there are many shades of gray in between. So, many polymeric conditions can make a plastic material partially ductile and partially brittle. Therefore, most of the plastics show intermediate ductility unless they are deliberately made to be very ductile or very brittle before breaking. Whereas moderately ductile material undergo little plastic deformation and then break in brittle manner. Brittle fracture is a low energy process, therefore material breaks at low stress. Brittle fracture occurs in two stages. First, initiation of crack, and second, rapid propagation of the crack, leading to complete fracture in catastrophic manner. A brittle crack often starts at a pre-existing defect, such as void or inclusion. A crack can also initiate in a defect-free material in a region of high stress concentration, such as at the edge of the drilled hole or notch. Brittle fracture involves the sudden failure of material by rapid crack growth immediately after crack initiation. Therefore, brittle fracture is also called as fast fracture. Fully brittle fracture surface that is lowest atomic bond length. Brittle fracture is the worst type of failure because it is fast and shows no visible sign of damage or prior warning that the material will break. Brittle fracture can normally be identified by smoothness of the failed surface. The main reason of brittle fracture is stress concentration that is present in the structure of molded or manufactured product. Discontinuities that develop during molding are evenly stressed. A fatigue fracture can be easily recognized from the appearance of a smooth and polished surface that corresponds to slow growth of crack. During the crack propagation step, characteristic pattern of concentric rings is spread over the smooth region of fractured surface. These concentric rings are known as beach marks or striation. Beach marks or striations are lines or curves radiating outward from the point of initiation of the failure. So, brittle fracture surface mainly show flat and shiny surface, chevron and hackle pattern. Fatigue brittle fracture show striation. These features are not visible from naked eye, therefore requires optical and electron microscopy. When we look at a flat surface of a pipe or a plate that broke in a brittle manner, V-shaped chevron making pattern can be seen. V-shaped chevron patterns are basically zigzag pattern of crack growth. Cracks usually grow in direction opposite to the orientation of chevron marks. So, chevron marks indicates about direction of crack initiation and direction of crack propagation. Similarly, these feather-like features, which is also known as hackles, is also characteristic of brittle fracture. Depending on the amount of force applied to the specimen, the rate of crack propagation can be more or less elevated. In case of very high propagation rate, the fracture surface pattern is more complex and a feather-like hackle pattern form. Similarly, formation of river pattern also indicates about the brittle fracture. Fatigue type of brittle fracture can be recognized from the appearance of three distinct features. First, shiny flat initiation area. Second, flat dull smooth area surrounding the shiny region that shows a slight change. This is from the point of just void starts to fracture due to formation of microvoids in cross after the necking on fracture. This mainly example of cup and cone ductile fracture fiber. Fibrous dull appearance of tensile fractured specimen or polyethylene also indicates ductile type of fracture. Polyethylene is a ductile material and requires high energy to break the specimen. Therefore, SEM image of polyethylene specimen shows fibrous morphology due to stretching of material and indicating that material failed in ductile manner.
In the pure state of some metals, the strength is not sufficient for specific engineering works. All the metals have movable internal dislocations due to stresses associated with the forming process. The movement of these dislocations causes plastic deformation. In other words, it is the movement of dislocation in the material which allows for deformation. For many years, the goals of material engineers have been to increase the strength of metal and alloys to meet various applications. To increase the strength of a metal, the movement of dislocations must therefore be impeded or hindered, or even prevented entirely. The procedures adopted to increase the hardness, and thereby increase the strength of metals, are called strengthening mechanisms. These strengthening mechanisms give engineers the ability to tailor the mechanical properties of the metal to suit a variety of different applications. For this, a good knowledge of the strengthening mechanism in different metals and alloys is required. There are 6 common methods for strengthening metals and alloys in metallurgy. Each is a method to prevent dislocation motion and propagation or make it energetically unfavorable for the dislocation to move. These 6 strengthening mechanisms are discussed in this video. Welcome to James Sword Research Channel. If you are new to the channel, please subscribe to the channel, like and share the video, and also turn on the notification icon for more content. What is the definition of a strengthening mechanism? The strengthening mechanism, also known as the metal hardening process, is any type of method used to increase the hardness, tensile strength, and yield strength of a material by prohibiting the mobility of numerous dislocations. The 6 main common types of strengthening mechanisms are 1. Grain size reduction, 2. Solid solution alloying, 3. Precipitation hardening, 4. Dispersion hardening, 5. Strain hardening, 6. Martensitich hardening. 1. Grain size reduction. The stress required to move a dislocation from one grain to another to plastically deform a metal depends on the grain size. During the plastic deformation, the mobility of the dislocation will take place across the grain boundary between the 2 grains. The size of the grains or average grain diameter in a polycrystalline metal influences the mechanical properties of a metal. This is because grains usually have different crystallographic orientations and common grain boundaries. The grain boundary acts as a barrier to dislocation motion for 2 reasons. 1. Since the grains are of different orientations, a dislocation passing will have to change its direction of motion. This becomes more difficult as the crystallographic misorientation increases. 2. The atomic disorder within a grain boundary region will result in the discontinuity of slip planes from one grain to the other. The strength and hardness are directly related to the plastic deformation achieved by obstructing the mobility of dislocation. Therefore, a fine-grained material, one that has small grains, is harder and stronger than coarse grains, one that has big grains. This is because when the grain size is coarse, the grain boundary area is reduced, and the obstruction to the dislocation area is reduced. But when the grain size is reduced or fine grains, the boundary area that obstructs the dislocation motion will increase. For many materials, the yield strength varies with the grain size according to this expression, termed the Hall-Petch equation. The grain size can be reduced by the rate of solidification from the liquid phase, and also by plastic deformation followed by an appropriate heat treatment. 2. Solid solution alloying. The presence of solute atoms produces lattice strains, either tensile or compressive depending on the relative size of the solute atoms. Small impurities tend to concentrate at regions of compressive strains, while large impurities tend to concentrate in the region of tensile strains. The solute atoms generate local shears that oppose dislocation motion. Since no 2 elements have the same atomic diameter, solute atoms will be either smaller or larger than the solvent atoms. So how does solid solution alloying help to strengthen metals? The solid solution technique works by adding atoms of one element, the alloying element, to the crystalline lattice of the base metals, resulting in either substitutional or interstitial point defect in the crystal. The solute atoms cause lattice distortion that impedes dislocation motion, increasing the yield stress of the metal. Solute atoms have stress fields around them which can interact with those of dislocations. These impurities act as an obstacle to moving dislocation and minimize the propagation of the dislocation. The solid solution strengthening depends on the following factors. 1. Concentration of solute atoms. 2. Shear modulus of solute atoms. 3. Size of solute atoms. 4. Valency of solute atoms for ionic metals. 3. Precipitation hardening. Precipitation hardening, also known as H-hardening, is a thermal process that increases the yield strength of malleable alloys. The phenomenon of precipitation hardening was discovered by Alfred Wilm, a German metallurgist. The precipitation hardening mechanism involves the precipitation of fine-grained particles within the matrix of the original alloy, that is the formation and growth of fine-grained particles. This occurs when a supersaturated solid solution has been rapidly cooled and a second phase comes out of the solution. These precipitate particles obstruct the propagation of the dislocation that causes deformation when stress is applied to alloy parts. This is because of the different crystallographic structure compared to the surrounding metals.
The process of precipitation hardening can be simplified into three major stages. They are the dissolution or solution treatment, quenching, and aging. The dissolution or solution treatment. This step involves heating the alloy to a temperature just below solid solution. As these substances evenly in the alloy. These particles are typically larger than those in precipitation hardening. Ahead quantities. The vibrations introduced by strain hardening impede each other movements. That is, if two dislocations cross, dislocation line entanglements occur, causing the formation of a jog which opposes dislocation motion. Networks of entangled dislocations render a material hard as they inhibit dislocation movements. In addition to maximizing dislocation density, work hardening changes the following parameters of the metal: increase in hardness, yield strength increases, ductility decreases as metal becomes more brittle, and grain becomes directional. Martensitich hardening. The Martensitich formation is undoubtedly one of the most impressive strengthening mechanisms in steel, although it unfortunately leads also to brittleness. Martensitich formation or phase occurs in steel when the austenite phase is cooled rapidly to room temperature. This is achieved by firstly heating the steel to a temperature where the steel changes from ferrite into austenite, that is, changes crystal structure from body-centered cubic to face-centered cubic. In the austenite phase, the steel dissolves a lot more carbon. The steel is then quenched or cooled at a very fast rate so that the carbon does not have time to form precipitates of carbides. Due to the extreme supersaturation of solid solution carbon, the crystal lattice becomes body-centered tetragonal. This phase is called martensite. Because of the formation of a body-centered tetragonal structure from a face-centered cubic structure, the latticite is a hard phase, and the intense stress field around the carbon atoms in martensite effectively hinders the motion of dislocation. Martensite is a hard phase, and its hardness depends on the carbon in the austenite or steel. Production. The overwhelming dominance of steel comes not just from its strength, they all have the exact same chemical composition. The only difference is they've been heat treated in different ways. This ability to control and fine-tune the properties of the material through precise heating and cooling really is the superpower of usually a few other elements in small proportions. Steels are classified based on carbon content, as low carbon, medium carbon, and high carbon steels. Anything beyond that, above 2.1% carbon, is called cast iron. If a steel contains a significant amount of alloying elements, above around 1%, it's called an alloy steel. Otherwise, it's a plain carbon steel. To understand how heat treatment can transform the properties of these materials, and the effect different carbon concentrations can have, we first need to look at the main ingredient, iron, to see how it behaves at different temperatures. Pure iron goes through several changes as it's heated. At room temperature, the iron atoms are arranged in a body-centered cubic form, BCC, with one atom at each corner of the unit cell and one in the center. This is called ferrite. Above 912 degrees Celsius, iron becomes more stable in a different atomic arrangement and undergoes a phase transformation. The atoms shift from a body-centered cubic structure to a face-centered structure, where atoms are packed more closely and efficiently. This FCC form of iron is called austenite. Let's visualize the phase transformations of iron on a graph. The ferrite to austenite transformation happens at 912 degrees. As temperature keeps increasing, iron changes back to ferrite at 1394 degrees, before melting to a liquid at 1538 degrees. These different solid phases are called allotropes of iron, and for convenience, a Greek letter is assigned to each one. Now let's see what happens when we add carbon. We can extend the diagram to show how the phases within the material change with different amounts of carbon. This is the phase diagram for iron-carbon alloys. The amount of carbon in the alloy affects the transformation temperatures, but it also introduces new phases. Because carbon atoms are small, they fit into the interstitial spaces between the iron atoms, but the BCC structure of ferrite can only accommodate a tiny amount of carbon. It has a maximum solubility of 0.02% carbon by weight at 723 degrees, which is around 1 carbon atom for every 1,000 iron atoms, and it's even less than that at lower temperatures. If the alloy composition contains more carbon than the ferrite can handle, the excess carbon atoms have to go somewhere. So a new phase called cementite forms alongside the ferrite. Cementite is a hard, brittle compound made up of 1 carbon atom for every 3 iron atoms. Austenite can hold a much larger amount of carbon than ferrite, from 0.8% at 723 degrees to 2.1% at 1147 degrees, which is roughly 1 carbon atom for every 10 iron atoms. If more carbon is added, we obtain a 2-phase material with austenite and cementite phases. There are several other possible phase combinations depending on the temperature and the amount of carbon. The phase diagram tells you which microstructures form at different temperatures and for different carbon concentrations, and as we'll see later on, this is the key to understanding how heat treatment works. For an alloy containing 0.8% carbon, the structure remains austenite while cooling until it reaches 723 degrees. At this temperature, the austenite undergoes a transformation from an FCC to a BCC structure, and the excess carbon the new BCC structure can't contain combines with iron atoms to form cementite. These two phases form a distinctive microstructure consisting of alternating layers of ferrite and cementite, which is called pearlite. This composition is a special case because the austenite transforms entirely and simultaneously into ferrite and cementite, producing only pearlite. The point on the graph at which this happens is called the eutectoid point, and steel with the corresponding 0.8% carbon composition is called eutectoid steel.
In hypo-eutectoid steels, those containing less carbon than the eutectoid composition, some ferrite forms before the eutectoid temperature is reached. On further cooling, the remaining austenite transforms into pearlite. The final microstructure ends up being a mix of pro-eutectoid ferrite and pearlite. In hyper-eutectoid steels, cementite forms first, as the austenite cools. At the eutectoid temperature, the remaining austenite transforms into pearlite, so the final microstructure is a mix of pro-eutectoid cementite and pearlite. All of these transformations rely on diffusion, the movement of carbon and iron atoms through the lattice to form new phases. Because diffusion takes time, the iron-carbon phase diagram only represents equilibrium conditions. It assumes cooling and heating occur slowly enough for the atoms to fully rearrange into the most stable phases. But it can take minutes, hours, or even days for austenite to fully transform into ferrite, depending on composition and temperature. The time it takes for a phase transformation to occur can be determined through testing. A small sample is heated until it's fully austenite, then rapidly cooled to a target temperature and held there for a set amount of time. After this hold, the sample is rapidly cooled to room temperature to interrupt the transformation, and the microstructure can be examined to get an idea of how much of the austenite has turned into ferrite and cementite. By repeating this test for different temperatures and holding times, you can start to map out the relationship between time, temperature, and the phases that form in a given steel. This is called a time-temperature transformation, or TTT diagram. The dashed line at the top of the diagram marks the equilibrium transformation temperature. At temperatures below this line, austenite is unstable. Given enough time, it will eventually transform into ferrite and cementite. The diagram shows us how long this transformation will take if the steel is cooled to and held at a constant temperature. If this eutectoid steel is cooled to and held at 500 degrees, for example, the diagram tells us the austenite will start transforming into ferrite and cementite in less than a second, and the transformation will complete after about 9 seconds, leaving no remaining austenite. The TTT diagram is where things get really interesting, because it's where we start to see non-equilibrium phases emerging, phases that play a central role in heat treatment. The most important of these is the martensite phase. It forms when austenites cooled so rapidly the carbon atoms don't have time to diffuse out of the FCC structure to form cementite. The FCC lattice wants to transform to BCC, but can't because of the trapped carbon atoms, so it ends up distorting into a new, body-centered tetragonal structure instead, which is called martensite. The BCT lattice forms almost instantly, growing out from austenite grain boundaries, and propagating at close to the speed of sound. This happens so fast because the transformation from FCC to BCT is diffusionless. Unlike the other phase transformations we've seen, it happens without any long-range motion of the atoms. The result is a microstructure of long, thin plates of martensite slicing through the prior austenite grains, each plate being a region where the atoms have all displaced in the same direction to form the BCT lattice. The distorted lattice of martensite makes it an extremely hard and strong, but also very brittle material. This is due to the trapped carbon atoms, which strain the lattice, locking the structure in place and impeding the motion of dislocations. The steel's carbon content has a big impact here. More carbon means greater distortion of the lattice, which increases hardness and strength at the cost of increased brittleness. On the TTT diagram, martensite appears as a region stretching along the bottom of the graph. 3 horizontal lines mark the temperatures at which martensite formation starts, reaches 50% completion, and finishes. Because it's diffusionless, no time elapses before starting or completing the transformation. It happens immediately once the temperature drops below the martensite start line. If the steel is cooled to a temperature between the martensite start and finish lines, only part of the austenite transforms, leaving a mix of martensite and retained austenite. A whole range of other microstructures can be achieved by manipulating time and temperature. A key feature here is the inflection point of the TTT diagram, often called the nose of the diagram. It marks the shortest transformation time, the temperature at which austenite is least stable and begins to transform most rapidly. Above the nose, we get pearlite, the alternating layers of ferrite and cementite we saw on the iron-carbon phase diagram. At higher temperatures, the transformation proceeds more slowly, giving carbon atoms time to move over longer distances, resulting in a coarse, pearlite microstructure, with wider spacing between ferrite and cementite layers. At lower temperatures, carbon atoms have less time to diffuse, so pearlite. Because the hard, brittle cementite of the nose, diffusion distances are even more restricted, which allows a different microstructure, bainite, to form. This is still a combination of ferrite and cementite, but with a much finer, more irregular mixture of the two phases. This and lower bainite form at higher and lower temperatures within the bainite range, and have fixed temperature. These more realistic cooling conditions are shown on a continuous cooling transformation, or CCT diagram. This is similar to the TTT diagram, except instead of holding the steel at a fixed temperature, the diagram is based on continuous cooling paths. Each of these curves represents a different linear cooling rate. Cool this 1080 steel from 800 degrees Celsius at a rate of 200 degrees per second, and you'll obtain martensite. At 50 degrees per second, you'll obtain a mixture of pearlite and martensite, and at 10 degrees per second, you'll get 100% pearlite. The CCT diagram shows how difficult it can be to obtain martensite.
Plain carbon steels often require very high cooling rates to miss the nose of the curve and end up in the martensite region, rates that aren't achievable in practice. This is one of the main reasons alloying elements like nickel and manganese are added to steel. They shift the CCT curves to the right so that martensite can be obtained at slower cooling rates. Unlike the nose, will transform into pearlite elements at certain cooling rates, without being reheated to austenite. This is another use of alloying elements. They can be added to delay pearlite transformation, which uncovers a bainite nose and allows bainitic steels to be obtained at certain cooling rates. It's this complex choreography between chemical composition, transformation kinetics, and the resulting microstructure that makes steels such complex and fascinating materials. Now we can finally get to heat treatment, which is all about using careful heating and cooling to manipulate the microstructure of steel parts to obtain useful or improved material properties. 4 key heat treatment processes are annealing, normalizing, quenching, and tempering. Let's see how they work. Annealing is used to make steel soft, ductile, and easy to work with. It's often applied to steel parts after forging or casting to relieve stresses and make the part easy to machine. The process involves heating the steel into the austenite region, then cooling it very slowly inside the furnace. Because the cooling is so gradual, the carbon atoms have plenty of time to rearrange into the wide ferrite and cementite layers of coarse pearlite, which has low strength, but is very soft and ductile. Annealing is usually a preparation step before machining or other processing. Normalizing is similar to annealing. Both heat the steel into the austenite region, with normalizing using a slightly higher temperature. The main difference is the steel is cooled in air instead of slowly in the furnace. The higher temperature helps better eliminate irregular or patchy microstructure left over from previous processing steps like casting or rolling, and the faster cooling rate produces a fine pearlite structure that's stronger and harder than annealed steel, while still retaining useful ductility. The process normalizes the steel, resetting it to a uniform, fine microstructure with good strength and hardness. Quenching is a heat treatment process that involves very rapid cooling, usually by plunging the steel part into a bath of water, oil, or other medium, depending on the cooling rate required. The objective of this rapid cooling is to produce martensite. The quenched steel has high hardness and strength, but is far too brittle to be of use in most applications. Tempering is a follow-up process to quenching. The quenched martensite steel is reheated to temperatures between 200 and 600 degrees Celsius, below the levels needed to transform the steel into austenite. It's held at this constant temperature for a defined time period, anywhere from a few minutes to several hours before cooling, usually in air. During this tempering process, fine particles of cementite, allowing the BCT martensite lattice to relax back towards a BCC ferrite structure. The resulting microstructure is called tempered martensite. This transformation greatly improves the ductility and toughness of the quenched steel, while still retaining much of its strength and hardness thanks to the finely dispersed cementite particles. Steel in this quenched and tempered condition is usually referred to as hardened steel. Quenching and tempering is used for critical parts that need high strength combined with toughness, like crankshafts, high-strength bolts, tools, or heavy-duty structural components. It needs sufficient carbon to be effective, though. In low-carbon steels, even if martensite forms during quenching, there's too little carbon to significantly distort the lattice, so these heat treatments produce little to no increase in strength and hardness. The objective of quenching is to cool the material fast enough that austenite turns into martensite through the entire cross-section of the material. This can be challenging with thick components, where the core of the material will take longer to cool than the surface, resulting in pearlite or bainite forming within the part instead of martensite. Hardenability is a parameter used to quantify a steel's ability to form martensite to a given depth during quenching. A steel with good hardenability will be able to form martensite more easily at slower cooling rates and produce martensite all the way through thick sections. The Jominy end quench test is the standard method for measuring the hardenability of steels. It involves heating a cylindrical steel sample that's 1 inch in diameter and 4 inches long until it's fully austenitic. One end of the sample is then quenched with a standardized water spray setup, creating a controlled cooling rate that decreases as you move up the sample. A flat is then ground along the length of the sample, and Rockwell hardness measurements are taken at regular intervals from the quenched end. The results are plotted as a Jominy hardness curve. Hardenability is mainly determined by composition. These different steel grades have very different curves. The maximum hardness at the quenched end on the left of the graph is governed by carbon content. The 1080 steel reaches a higher hardness at the quenched end than the 1040 steel because it contains more carbon. But the rate at which hardness decreases with distance from the quenched end is mainly influenced by alloying elements. These elements shift the TTT and CCT curves to the right, allowing martensite to form at slower cooling rates, resulting in high hardness even deep into the part.
A steel like 4340, which contains nickel, chromium, and molybdenum, is a classic example of an alloy with excellent hardenability and is a good choice for thick parts that need to be quenched and tempered. In some applications, we don't actually want the entire component to be hardened. Instead, we might only need a hard, wear-resistant surface, while keeping the interior tough and ductile. This is often the case for components like gears and shafts that experience high contact stresses, but also need to resist impact loading. Surface hardening techniques can be used on these components to intentionally create a hard outer layer, while preserving the softer, more ductile core. Induction hardening and flame hardening involve directly heating the surface of the component, followed by quenching, to create a hard, martensitic layer. But these hardening methods are only effective in medium or high carbon steels, because low carbon steels don't contain enough carbon to develop sufficient hardness. For low carbon steels, case hardening techniques that actually alter the surface composition can be used instead. Carburizing involves heating the part in a carbon-rich environment to increase surface carbon content, followed by quenching. Nitriding introduces nitrogen into the surface to form hard nitride compounds, without the need for quenching, a big advantage for precision parts, since it avoids any warping that can occur with quenching. In practice, heat treatments like annealing, normalizing, quenching, and high contact stress the interior to cool the material improves the doubles, like cranking carbon to significantly through the entire cross-section of the material. This can be challenging with thick components, where the core of the material will take longer to cool than the surface, resulting in pearlite or bainite forming within the part instead of martensite. Hardenability is a parameter used to quantify a steel's ability to form martensite to a given depth during quenching. A steel with good hardenability will be able to form martensite more easily at slower cooling rates, and produce martensite all the way through thick sections. The Jomny end quench test is the standard method for measuring the hardenability of steels. It involves heating a cylindrical steel sample that's 1 inch in diameter and 4 inches long until it's fully austenitic. One end of the sample is then quenched with a standardized water spray setup, creating a controlled cooling rate that decreases as you move up the sample. A flat is then ground along the length of the sample, and Rockwell hardness measurements are taken at regular intervals from the quenched end. The results are plotted as a Jomny hardness curve. Hardenability is mainly determined by composition. These different steel grades have very different curves. The maximum hardness at the quenched end on the left of the graph is governed by carbon content. The 1080 steel reaches a higher hardness at the quenched end than the 1040 steel because it contains more carbon. But the rate at which hardness decreases with distance from the quenched end is mainly influenced by alloying elements. These elements shift the TTT and CCT curves to the right, allowing martensite to form at slower cooling rates, resulting in high hardness even deep into the part. A steel like 4340, which contains nickel, chromium, and molybdenum, is a classic example of an alloy with excellent hardenability and is a good choice for thick parts that need to be quenched and tempered. In some applications, we don't actually want the entire component to be hardened. Instead, we might only need a hard, wear-resistant surface, while keeping the interior tough and ductile. This is often the case for components like gears and shafts that experience high contact stresses, but also need to resist impact loading. Surface hardening techniques can be used on these components to intentionally create a hard outer layer, while preserving the softer, more ductile core. Induction hardening and flame hardening involve directly heating the surface of the component, followed by quenching, to create a hard, martensitic layer. But these hardening methods are only effective in medium or high carbon steels, because low carbon steels don't contain enough carbon to develop sufficient hardness. For low carbon steels, case hardening techniques that actually alter the surface composition can be used instead. Carburizing involves heating the part in a carbon-rich environment to increase surface carbon content, followed by quenching. Nitriding introduces nitrogen into the surface to form hard nitride compounds, without the need for quenching, a big advantage for precision parts, since it avoids any warping that can occur with quenching. In practice, heat treatments like annealing, normalizing, quenching, and tempering are combined into sequences along with forming and machining steps. Each stage of the manufacturing process prepares the steel for the next, until the final form is obtained with a microstructure that provides the desired balance of strength, hardness, and toughness. Taking any part from concept to a fully defined manufacturing process can be a lot of work, with no shortage of engineering decisions to be made along the way. From the definition of tolerances and surface fit difference, full-scale application, all available from material to help you catch potential production issues. हमारा एटम का ग्रुप बन के हमको कोई यूनिट सेल मिलता है और इस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन कि जब हम किसी मेटल के ठीक है जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली लाइन इसको बोलते हैं लिक्विड लाइन क्या ठीक है और इट इज द अलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक कॉपर एंड टिन सॉरी कॉपर तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि बाय द टेस्टिंग होता है तो वहां पे आपको बिगर टोरेस की टेस्टिंग क्या होता है कि हमको कौन सा मेटल बनता है ऑस्टेनाइट से बैनाइट हमको मिलता है और एनिलिन के अकॉर्डिंग कौन सा मेटल बनता है परलाइट क्रिस्टल साइकिल करके चक्कर लगा इंपैक्ट इन पर एटम्स को क्लोज रखेगा लिमिट हमारा बन जाता है
में कितने एटम्स होते हैं? केवल 2। स्ट्रेच करेंगे उसका शेप एंड साइज बदल जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कितना होता है 0.15 से लेके ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और ये जो लिग्नाइन है, लिग्नाइन जो है वो सेल्यूलोज एलॉय है, उसका मशीनिंग हम आसानी से कर सकते हैं। मशीनिंग की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसके एप्लीकेशन कौन से हैं? तो रिपीटिंग लोड्स, रिपीटिंग लोड दे रहा हूं, ऐसे रिपीटिंग लोड एक मेटल ले और दूसरी कितना होता है 0.15 से लेके 0.25%। हेलो, तो प्रीवियस वीडियो में हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में तो फ्रेंड्स लीवर रूल मास कंजर्वेशन पे बेस्ड रहता है। Hi, mass together or alloy them. This allows us to augment the material properties and open temperature and atmospheric temperature if solvent atoms is a solute. In this case, we can use something called the lever rule. To run through this example, let's start again with a simple complete solid solubility system. First of all, we start by drawing a horizontal tie line at the temperature of interest in the two-phase region. We then mark the overall alloy composition on this tie line, which we've arbitrarily put at 50% nickel. If we want to calculate the fraction of one phase, we do this by taking the length of the tie line from the overall alloy composition to the phase boundary of the other phase, and then divide this by the total tie line length. This equation is given at the bottom for the generalized form, describing the mass of the liquid, and the mass of the nickel percent and to that of phase is 50%. और ये क्या बताता है? ये बताता है अमाउंट ऑफ। तो फ्रेंड्स लीवर रूल है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन है, जो 40% बी लिक्विड प्लस प्रेजेंट है उसको बताएगा, और जो ये टू फेज रीजन है इसको हम लोग ने ऑलरेडी आयरन। तो फ्रेंड्स लीवर रूल मास कंजर्वेशन पे बेस्ड रहता है, और ये क्या बताता है? ये बताता है अमाउंट ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन टू फेज रीजन। यहाँ पे टू फेज रीजन कौन सा है? लिक्विड प्लस सॉलिड वाला रीजन है। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड के जो बीच का रीजन है ये बेसिकली टू फेज रीजन है। कौन कौन से यहाँ फेजेस प्रेजेंट है? लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। ठीक है, तो बेसिकली ये टू फेज रीजन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ फेजेस प्रेजेंट है उसको बताएगा, और जो ये टू फेज रीजन है इसको हम लोग ने ऑलरेडी आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़ा हुआ है। देखिए वहां पे कुछ रीजन रहते थे, लिक्विड प्लस गामा रीजन, लिक्विड प्लस डेल्टा रीजन, सिमिलरली रहता था आपका लिक्विड प्लस Fe3 रीजन, फिर होता था आपका गामा प्लस अल्फा रीजन। तो यही सारे जो रीजन है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टू फेज रीजन, और जो टू फेज रीजन है वो प्रेजेंट रहेगा बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम में। और बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम में दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, और इन्हीं दो डिफरेंट कंपोनेंट से ही हम लोग बनाते हैं एलॉयज। ठीक है, तो एलॉयज की फॉर्मेशन के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ा फेज डायग्राम। अब जो फेज डायग्राम है वो अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगले एक से दो वीडियो के अंदर हम लोग सारे के सारे फेज डायग्राम बहुत अच्छे से, साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स आए हैं गेट में उनको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, इस स्लाइड में जो मैंने टॉप में स्काई ब्लू कलर से बाउंड्री मार्क की हुई है, इस बाउंड्री के ऊपर जो फेज प्रेजेंट है वो लिक्विड है। ठीक है, यानी कि जो स्काई ब्लू कलर लाइन के ऊपर जो रीजन रहेगा वो रहेगा लिक्विड रीजन, और जो ये लाइन है इस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडस लाइन। ठीक है, तो आयरन कार्बन डायग्राम में जिन्होंने लिक्विडस लाइन को मिस कर दिया था वो लोग देख सकते हैं, यही स्काई ब्लू कलर की लाइन है लिक्विडस लाइन। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं लिवर रूल पे और जानते हैं कुछ चीजें। तो मैंने आप लोग को आयरन कार्बन डायग्राम में बताया था कि सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट था प्योर आयरन, यानी कि 100% आयरन। उसमें हम लोग ने एलाइंग एलिमेंट के तौर पे ऐड करना चालू किया कार्बन को, और वो कार्बन एज एन इंप्योरिटी ऐड होता गया और प्रॉपर्टी हमारी इंप्रूव होती गई। तो देख लीजिए सेम जो आयरन कार्बन डायग्राम में आपने कांसेप्ट सीखा था, सेम कांसेप्ट यहां पे भी है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें सबसे लेफ्ट में नीचे में लिखा हुआ 0% बी 100% ए। बेसिकली 0% बी का मतलब है 0% कार्बन और 100% आयरन। जब आयरन कार्बन डायग्राम में इस पर्टिकुलर फिगर को पुट करेंगे तो जो 0% बी है वो हो जाएगा 0% कार्बन, और 100% ए जो लिखा है वो हो जाएगा 100% आयरन। अब ये जो 100% आयरन है इसमें हम लोग धीमे धीमे कार्बन का अमाउंट ऐड करते चले जाएंगे। तो सिमिलर वे में आप लोग को इस डायग्राम में भी समझना है। सबसे पहले प्रेजेंट था आपके पास 100% ए, अब हम लोग ने उसमें एज एन एलाइंग एलिमेंट बी को ऐड करना स्टार्ट किया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 0% बी बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा 40% बी 60% ए, और ये जो बी है और बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पहुंच जाएगा 100% बी और 0% ए। तो जो आपका लीवर रूल है वो टू फेज रीजन में काम करता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन है, बीच में लिक्विड और सॉलिड के बीच का रीजन है, वहां पे लीवर रूल लगने वाला है। इतना हम लोग समझ चुके हैं। और जब भी लीवर रूल बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग को दो डाटा हमेशा दिया जाएगा। पहला जो डाटा रहेगा वो टेंपरेचर, आप लोग को एक कोई ना कोई टेंपरेचर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको टेंपरेचर नहीं देता है तो कोई ना कोई हिंट दी जाएगी जहां से आप लोग समझ जाएंगे कि टेंपरेचर किस रेंज में रहने वाला है। ठीक है, और दूसरा जो डाटा है वो आपको दिया
जाएगा ओवरऑल कंपोजिशन। ये डाटा डेफिनेटली आप लोग को दिया ही जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग को ओवरऑल जो कंपोजिशन है इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो गिवन है वो है 40% बी 60% ए। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा वो आपको बी के फॉर्म में दिया जाएगा, जो जीरो से बढ़ते हुए 100% जा रहा है उसी बी को वो देगा। तो इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन एग्जामिनर देगा आपको तो वो बताएगा 40% बी, तो आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर लोगे कि मैक्सिमम होता है 100%, तो 100 - 40 रहेगा वो रहेगा ए का अमाउंट, यानी कि 100 - 40% ऑफ बी वो रहेगा 60% ऑफ ए के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या है थंब रूल, बेसिकली जब भी लीवर रूल का क्वेश्चन आएगा हमेशा दो डाटा देगा, पहला आपको टेंपरेचर, अगर टेंपरेचर नहीं दिया तो कोई ना कोई क्लू देगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि टेंपरेचर किस रेंज में लाई करने वाला है, और दूसरा जो डाटा डेफिनेटली दिया जाएगा वो है ओवरऑल कंपोजिशन, और ओवरऑल कंपोजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बी का अमाउंट देगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को बी का डाटा इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं तो जो बी का अमाउंट है वो जीरो से वेरी करता है और पहुंचता है 100% तक, इसीलिए बी का डाटा मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक। अब आप लोग के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये ए और बी क्या चीज है। मैंने बताया था जैसे आयरन कार्बन में ए हो गया आपका आयरन और बी हो गया आपका कार्बन। सिमिलरली कॉपर और टिन का अगर आप एलॉय बना रहे हैं तो ए हो गया कॉपर और टिन जो है वो हो गया बी, ठीक है। फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे दो चीजें और छूट रही हैं। पहला 100% ए वाली लाइन में 500 डिग्री सेल्सियस, जो 500 डिग्री सेल्सियस है वो बेसिकली ए का मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इतना सा है कि जैसे ही इस 500 डिग्री सेल्सियस को हम क्रॉस करेंगे तो जो हमारा ए सॉलिड फॉर्म में था वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। सिमिलरली आपका जो बी है उसमें देखिए 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस का मतलब इतना सा है कि जब बी को हम लोग हीट करना स्टार्ट करेंगे तो सारा का सारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड रीजन में। कब? जब हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेंगे। और जो ये 500 डिग्री सेल्सियस है ये बेसिकली प्योर ए के केस में मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली जो प्योर बी था यानी कि 100% बी 0% है, तो प्योर बी जो था उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को इस डायग्राम के अंदर सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स अब हम लोग लीवर रूल को समझने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आप लोग को कि ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको 40% बी गिवन है, ठीक है, और आप लोग को एक टेंपरेचर 700 डिग्री सेल्सियस गिवन रहेगा, या मान लीजिए कोई और टेंपरेचर गिवन रहेगा, और अगर टेंपरेचर नहीं गिवन है तो आपको कोई क्लू दिया जाएगा। तो यहाँ पे 700 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो जैसे ही आपको ओवरऑल कंपोजिशन पता रहे और टेंपरेचर पता रहे तो आप लोग एक टेंपरेचर के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ए बी से रिप्रेजेंट की हुई है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं टाई लाइन। और जो ये टाई लाइन है इसको हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि इस टू फेज रीजन यानी कि जो लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन है इसके अंदर हम लोग फेज का अमाउंट बता सकें। तो सबसे पहले 700 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग टू फेज रीजन के अंदर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे टाई लाइन, या क्योंकि 700 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग लाइन कीजिए, या बोलिए कांस्टेंट टेंपरेचर के करस्पॉन्डिंग लाइन कीजिए। तो जब कांस्टेंट टेंपरेचर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल, ठीक है। तो जो ये लाइन रहेगी इस लाइन को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल लाइन, और ये लाइन बेसिकली बताइए आपको फेजेस की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है इस टू फेज रीजन के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने जो एबी लाइन है उसको ड्रॉ करना सीख लिया है, यानी कि जो कांस्टेंट टेंपरेचर लाइन थी आइसोथर्मल जो लाइन थी उसको हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है और एबी लाइन हमें मिल गई है। ओवरऑल कंपोजिशन हमें पता था, तो 40% बी के करस्पॉन्डिंग हम लोग ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब ये दोनों की दोनों लाइन हमें मिल रही है पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो टाई लाइन थी यानी कि 700 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो आपका टू फेज रीजन था उसके अंदर एक लाइन एबी ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है, और ओवरऑल कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग जो ओ पॉइंट था वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो जो आपकी टाई लाइन थी एबी लाइन वो बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड हो गई। तो पहला पार्ट था उसका एओ और दूसरा पार्ट था ओबी, ठीक है। तो अब हम लोग इस लाइन की हेल्प से बता देंगे कि 40% बी और 700 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर टू फेज रीजन के अंदर और कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है इस टू फेज रीजन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग इसका आंसर अपने मन में सोचिएगा, ठीक। मैं आप लोग को ओ पॉइंट पे खड़ा कर रहा हूं, ठीक, और आपके पास दो रास्ते हैं ओ ए और ओ बी, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप लोग को लिक्विड रीजन के अंदर एंट्री करनी है तो आप लोग कैसे पहुंच पाओगे? तो आप लोग का जवाब रहेगा जब आप लोग ओ ए पाथ को चूज करोगे तब, ठीक। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं अगर आप लोग को सॉलिड रीजन में एंट्री करना है और आप ओ पॉइंट पे खड़े हैं तो आप लोग कैसे एंट्री कर पाओगे? तो आप लोग बताओगे कि जैसे आप लोग ओ से बी की तरफ मूव करोगे यानी कि ओबी लाइन को फॉलो करोगे तो ओबी लाइन को क्रॉस करते ही आप लोग पहुंच जाओगे सॉलिड रीजन के अंदर। फ्रेंड्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि जो लीवर रूल है वो बताएगा कितना अमाउंट ऑफ मास फ्रैक्शन प्रेजेंट है पर्टिकुलर फेज का इन टू फेज रीजन, ठीक है। तो यहां पे जो टू फेज रीजन के अंदर फेजेस प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? लिक्विड और सॉलिड। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो फ्रेंड्स जो लीवर रूल है वो ये कहता है कि अगर आप लोग को मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड या कोई पर्टिकुलर फेज का निकालना है तो आप लोग सबसे पहले सेंटर पे खड़े हो जाओ, यानी कि ओ पॉइंट पे आप लोग हमेशा खड़े हो जाओ। अब उस पॉइंट से जिस पर्टिकुलर फेज की बात कर रहा है यानी कि यहां लिक्विड की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिक्विड फेज की तरफ आप लोग मूव मत करो बल्कि इसके अगेंस्ट मूव करो। तो आप लोग ओ पॉइंट पे खड़े हो और आप लोग को लिक्विड का अमाउंट निकालना है तो आप लोग कहां मूव करोगे? ओबी की तरफ मूव करोगे। सेम टाइम में मूव करना है यानी कि ओ से ए की तरफ जा सकते हो या ओ से बी की तरफ। तो अगर आप लोग को मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड निकालना है तो आप लोग ओ से बी की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि बी की तरफ जाने पे आपको मिलेगा सॉलिड। तो आप लोग को लिक्विड निकालना है तो हमेशा सॉलिड की तरफ भागना है। तो ओबी अपॉन टोटल लेंथ, मास फ्रैक्शन क्या है कि पर्टिकुलर फेज का अमाउंट अपॉन टोटल कितना अमाउंट है, ठीक है। तो जो आपका मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओबी अपॉन एबी। एबी क्या हो जाएगा? एओ प्लस ओबी, ठीक है। सिमिलरली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, और वो क्या हो जाएगा? आप लोग बेसिकली ओ पॉइंट पे खड़े हो और आप लोग को मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकालना है तो आप लोग मूव करोगे लिक्विड रीजन की तरफ, तो इसलिए हो जाएगा ओ ए अपॉन एबी, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लीवर रूल है वो बेसिकली मास कंजर्वेशन पे वर्क करता है, तो इसलिए जो मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ सॉलिड रहेगा वो 1 के इक्वल रहेगा या बोलिए 100% के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मास ऑफ सॉलिड अगर आपको निकालना है तो आप लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि मास ऑफ सॉलिड रहेगा इक्वल 1 माइनस मास ऑफ लिक्विड, या बोलिए 100% माइनस परसेंटेज ऑफ मास फ्रैक्शन इन लिक्विड, ठीक है। तो देख लीजिए लीवर रूल की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहां लिख दी है कि लीवर रूल स्टेट्स दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ गिवन फेज इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लीवर आर्म ऑन द अपोजिट साइड। ऑन द अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड है चीजें साइड में जो डायग्राम दिया गया है वो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। डिटरमाइन द मास फ्रैक्शन ऑफ फेजेस प्रेजेंट एट 184 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैं कहा टेंपरेचर गिवन है, देखिए 184 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दे रहा है, और लेड और टिन का क्योंकि एलॉय है तो उसमें जो टिन का परसेंटेज है वो देखिए 45% क्वेश्चन में दे रहा है। तो क्वेश्चन में दो चीजें मैंने कहा था देगा, पहला टेंपरेचर और दूसरा कंपोजिशन। तो पहला जो चीज है वो 184 डिग्री सेल्सियस दिया उसने, और जो कंपोजिशन है वो टिन का उसने दिया 45%। तो देख लीजिए जो 100% ए था तो वहां पे जो 100% ए था वो यहाँ पे 100% लेड है, और जो वहाँ 100% बी था वो यहाँ पे 100% टिन है, यानी कि टिन का परसेंटेज उसने ओवरऑल दिया हुआ है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कह रहा था बी का परसेंटेज हमेशा क्वेश्चन में देगा, तो यहाँ पे जो ओवरऑल कंपोजिशन दिया है वो बी का दिया है, और वो कितना है 45%। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो चलिए अब हम लोग मास फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, और आप लोग आ जाओ राइट हैंड साइड डायग्राम में। देखिए 184 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो वो जो 184 डिग्री सेल्सियस है उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लो, और देख लीजिए कंपोजिशन जो था बी का यानी कि टिन का वो 45% दिया है, तो वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब आप लोग देखिए टू फेज रीजन आपको मिल गया है एबी रीजन, ठीक।
45% करस्पॉन्डिंग आपने लाइन भी ड्रॉ कर ली है, तो आपको पॉइंट ओ जो है वो मिल चुका है। तो जैसे ही आप लोग 45% ओवरऑल कंपोजिशन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और 184 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, तो एक जो आपको टाई लाइन मिल रही है वो ए बी टाई लाइन आपको ऑलरेडी मिल गई है। और 45% करस्पॉन्डिंग जब है अल्फा हम लोग कैलकुलेट करना है, वो तो देखिए 16% है, वो है 18%। ओ बी 60 अपना मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वो रहेगा 1 के इक्वल। तो अब यहां से मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कैलकुलेट कर सकते हो, वो हो जाएगा 1 माइनस मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा नेचर। तो फ्रेंड्स, और 182 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तो आप लोग को जो रीजन मिल रहा है वो मिल रहा है एबी रीजन। बेसिकली एबी रीजन ही है आपका टू फेज रीजन। तो यहाँ पे जो अमाउंट प्रेजेंट है वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोग को जो फेजेस कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो है मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा और मास फ्रैक्शन ऑफ बीटा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को टाई लाइन एबी ऑलरेडी मिल चुकी है और आप लोग अब पहुंच गए हो पॉइंट ओ पे, ठीक। तो मैं आपसे पूछता हूं मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा निकालना है, तो पॉइंट ओ पे जब आप खड़े हो तो आपको अल्फा की तरफ मूव करना है, तो आप लोग जाओगे ओ ए की तरफ, ठीक। लेकिन आपको क्योंकि मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा निकालना है तो हमेशा आप लोग को अपोजिट जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग ओ ए की जगह ना जाकर के ओ बी की तरफ जाओगे। तो मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा हो जाएगा ओ बी अपॉन ए बी। ओ बी अपॉन ए बी आप लोग देख लो, एक्सट्रीम केसेस जो ए का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18% और बी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 97%, ठीक। तो अब फॉर्मुले में पुट कर दो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा और मास फ्रैक्शन ऑफ बीटा। बीटा के लिए बीटा का भी आप लोग पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, गेट में जो भी क्वेश्चन देगा वो हमेशा पूरी की पूरी डिटेल जितनी हो सकती है वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करी जाएगी। कभी भी आपसे एजम्पशन नहीं मान के चलता है कि आप लोग को ये डाटा याद होगा, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ डेटाज आपको ऑलरेडी याद करके चलने पड़ेंगे। वो सारे के सारे डेटाज क्या क्या याद करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसीलिए आप लोग कोई भी लेक्चर मिस मत करो, सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ो। आप लोग डिग्री सेल्सियस था तो क्यू का जो अमाउंट था वो 40% था, तो आप लोग 1250 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करो और 40 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ जब करोगे तो उससे जो आपको टाई लाइन मिलेगी वो हो जाएगी ए ओ बी टाई लाइन। अब आप पॉइंट ओ पे ऑलरेडी खड़े हो चुके हो और आपको कैलकुलेट करना है ओ बी निकल के आ जाएगा सॉलिड, यहां से आप लोग कैलकुलेट कर लो। चला मास गलत ऑप्शन तो मत करिए। तो चलिए, यही क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में 10 मार्क्स में आया हुआ है और ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। आप लोग ने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें सीख ली हैं, उसके बाद जब ये सॉल्व करोगे आप लोग तो आपसे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग ने लेक्चर 3 में सीखी थी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि प्रो अल्फा क्या चीज होती है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि गामा ऑस्टेनाइट रीजन को जब हम लोग कूल करते हैं तो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो पॉइंट ए से हम लोग कूल करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही पॉइंट बी जितना भी रीजन के अंदर जितना भी हमारा है ही हम लोग टोटल अल्फा निकालना है। तो प्रो अल्फा आपको कहां मिलेगा, प्रो अल्फा मिलेगा यूटेक्टॉइड पॉइंट से पहले तक, ठीक है। यानी कि जो आपको रीजन मिलेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा अल्फा प्लस गामा रीजन। We can then repeat this process for the liquid phase, which should also be 1 हम लोग बात भूल जाता है इसमें सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। स्टील हम बना सकते हैं कि आयरन के अंदर अगर कार्बन मिक्स कर दिया जाए कि तो क्या। अब देखो मेरे भाई, इनमें हर किसी में क्या चाहिए तो कितनी रेट हो जाएगी, परसेंट कार्बन डाल तो स्टील जो बना 2 ग्राम क्या होता है यार, कुछ भी नहीं। 2 ग्राम जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास कार्बन होगा, ये क्या होगा, आयरन होगा, आयरन होगा। बात समझ आई, इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, अब एक चीज कर सकते हैं कि इसके पीडीएफ मिल सकते हैं आपको, जब मैं अब ये भी दोबारा आपने चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आयरन कार्बन डायग्राम को समझना पड़ेगा। अब परसेंट का साइड ले जाएगा कार्बन की पानी को, ठीक है, आप समझ लें। तो इस वो आगे एक वीडियो बहुत अच्छी है, उससे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। हमें करना क्या है, बेसिक फंडा करना क्या है, हमें करना है कि हमें आयरन ऐड करना है, आयरन के अंदर कार्बन ऐड करना है, और उसके कारण होगा क्या, जब हम टेंपरेचर राइज करेंगे और उसमें कार्बन ऐड करेंगे, टेंपरेचर राइज करना है और उसमें कार्बन ऐड करना है, तो उसमें क्या है कि हमारा जो बीसीसी है वो एफसीसी में चेंज हो जाएगा। जब हम उसका टेंपरेचर बढ़ाते हैं ना तो वो एफसीसी में चेंज हो जाता है, फेज सेंटर क्यूबिक में चेंज हो जाता है, एफसीसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने टेंपरेचर बढ़ाया तो हमारे पास बीसीसी से क्रिस्टल स्ट्रक्चर खतरनाक चीजें थे, ग्रेन्स नहीं आएगा, टेंपरेचर बढ़ाएगा। इस अब मैं यहां पे सेम ना ये वाली चीज जो है ऊपर इसमें अच्छा ये लाइन इस तरह की है,
ठीक है। और ये लाइन हमारे पास जो आ रही है उसको मैं इस तरह से बना लेता हूं, हमारे पास ओके यहां पे आ जाते हैं ओके। तो ये जो लाइन है हमारे पास आएगी वो आएगी 723 डिग्री सेंटीग्रेड की, ओके यहां पे ये आएगी 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी खास क्यों है ये, इतनी खास क्यों है, किस लिए हमें इतना खास बनाया गया इसको? वो खास इसलिए बनाया गया है कि ये मेन पॉइंट क्या है इसका कि इसने भाई साहब ने टेंपरेचर, इस टेंपरेचर पे रिक्रिस्टलाइजेशन होने वाला है, रिक्रिस्टलाइजेशन होने वाला है। ओके ओके यहां पे आ जाते हैं। तो मेरे पास क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन होना है उस टेंपरेचर पे, ये वाले टेंपरेचर पे, तो इसको हम यूज कर लेंगे। ओके तो यहां आ जाते हैं। तो ये मेरे पास टेंपरेचर आ गया 723 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं नॉर्मली इतना स्लो करवाता नहीं हूं, लेकिन ये नया अभी बोर्ड है तो इसमें मुझे टाइम लगा है। इसमें क्या है हमारे पास कि बीसीसी से एफसीसी चेंज होगा, और ये मैक्सिमम जितना यहां पे कार्बन ऐड हो सकता है वो है हमारे पास, यहां पे नोट कर लेना 0.025% कार्बन। बताओ इतना कम, इतना कम 0.025% कार्बन सिर्फ ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। ज्यादा नहीं ऐड कर सकते, बताओ ज्यादा नहीं ऐड कर सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकते हो। इसकी लिमिट बता दी इसने 0.025% कार्बन इसमें ऐड हो सकता है, इससे ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो एरिया है, ये लाइन जो होती है आयरन को, हम आयरन को कह देते हैं फेराइट। ये लाइन जो होती है इसको हम कह देते हैं फेराइट, Fe फेराइट, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो होगा वो होगा फेराइट। जब आयरन को फेराइट बोल दिया, ठीक है, मैं आगे आगे लिख देता हूं अलग से। तो आयरन को हम क्या बोलेंगे, फेराइट। तो ये हमारे लिए नए वर्ड्स होते हैं, हमने कभी पढ़ा नहीं होता इसके बारे में। तो ये फेराइट होता है, लेकिन जब हम इसके अंदर कार्बन ऐड कर दें, आयरन के अंदर हम कार्बन हल्की सी ऐड कर दें, कितनी, 0.025, तो उसका बन जाता है आयरन कार्बाइड, आयरन कार्बाइड। और ये आयरन कार्बाइड जो है उसको हम कह देते हैं परलाइट, परलाइट जैसे भी आप बोलना चाहिए उसको बोल सकते हैं, परलाइट बोलते हैं। और इसकी जो शेप होगी वो जिस तरह की होगी, अगर ग्रेन ये है तो इसके अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेंगी लाइंस दिखेंगी, और ये जो लाइंस होती है ये कार्बन की लाइंस होती है। ये कार्बन है तो ये वाला एरिया जो होगा आयरन, और ये जो लाइंस यहाँ पे दिखेंगी वो होगा हमारे पास कार्बन। दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास परलाइट बनता है। दोनों को मिक्स करने के बाद परलाइट बनता है, तो हमारे पास ये जो एरिया होगा, ये वाला सारा ये परलाइट का एरिया होगा, कि इसके अंदर जो कार्बन ऐड करेंगे तो इस एरिया को हम बोलेंगे परलाइट। तो ये क्या है, परलाइट है, ठीक है, परलाइट। ओके थोड़ा सा साफ लिख दें इसको, ठीक है, थोड़ा सा साफ लिख दें, और पेन की थिकनेस भी कम कर लें, थोड़ी सी ज्यादा है। ओके परलाइट लिख देते हैं, ओके परलाइट लिख दें, इस पेन से लिख देते हैं, यहाँ चलने दो, ये चलना, ओके परलाइट, सॉरी पेरलाइट। अब ठीक है, अब पेंसिल की तरह चल रहा है, अब पेरलाइट। तो ये पेरलाइट आ गया। अब भाई साहब बात आती है कि हमने बढ़ाना है इसका और टेम्परेचर। अब ये लाइन को समझना आपने, ये लाइंस है, कुछ लाइंस है, मैं धीरे धीरे इनके सारे को नाम बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि ये टेढ़ी लाइन क्यों है, लाइन टेढ़ी क्यों है। अब इसके बाद है क्या, इसके बाद जो बनेगा उसको हम कह देते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर। ये बीसीसी में आएगा, उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा एफसीसी। एफसीसी को हम, इस एरिया को हम कह देते हैं ऑस्टेनाइट, इसके ऊपर वाले एरिया को हम बोल देते हैं यहाँ पे ऑस्टेनाइट। नाम याद कर लो, ठीक है, नाम याद कर लो, इजी नहीं है, चलो ठीक है, फिर भी हमें याद तो करना ही है। इसको हम कहते हैं ऑस्टेनाइट, इस एरिया को, इसे हमें जाना है भाई साहब इसके पार। सिंपल सी बात, मैं एक और यहाँ पे आपको समझाता हूँ, इस लाइन की यहां से यहां और यहां से यहां, इस तरह से जाएगा। अब ये जो एरिया है ये ऑस्टेनाइट है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, फिर ये क्या चीज आ गई बीच में, ये क्या चीज आ गई, तो ये चीज जो है यहां डॉटेड दिखाता हूं, ये नो मैन लैंड है, ये नो मैन लैंड है। अब